everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and I'm also very good. So Raksha bandhan is coming. So today's tutorial is going to be about Rakhi makeup look. So without wasting any time, let's get started. सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है. Now I will moisturize it. Now I'll be going with the primer. Then after that I'll be using my foundation and मैं बहुत ही थोड़ा सा foundation लूँगी and face पे बहुत ही हल्का सा foundation लगाऊंगी because I don't want my makeup to look very loud. I want it to be very subtle. So बहुत ही थोड़ा सा मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी अपने फेस पे. अगर आप चाहो तो आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो फाउंडेशन की जगह. अब मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया तो मैं कंसीलर अप्लाई नहीं करूँगी बिकॉज इट्स माई चॉइस. आई डोंट वांट टू डू टू मच लेयरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन माई फेस. अब मैं यूज़ करूँगी चिक टिंट. So next I'm using a bronzer. Our bronzer is done. After this I will set my base with this loose powder. Now I'll be using a black kohl on the upper lash line. मैं सिर्फ इसे ऐसे हाफ ही अप्लाई करूँगी एंड मैं इसे क्विकली स्मच कर लूँगी. सो एक ऐसे फ्लैट ब्रश के साथ मैं इसे क्विकली स्मच कर लूँगी. दोनों आइज पे हम सेम कर लेंगे. देन आफ्टर दैट मैं इसी ब्रश में थोड़ा सा पिंक कलर लूँगी एंड जहाँ पे मैंने ये ब्लैक कोल लगाया ना वहीं पे मैं पिंक कलर से स्मज कर लूँगी. After this, I will do the same exact thing on the lower lash line. Now I'll use highlighter. Now I will use my highlighter on cheekbones, chin, nose and forehead. एंड मैं वही हाइलाइटर फिर अपने इनर पार्ट में भी आईज में लगा लूँगी टू जस्ट गिव दैट शिमरी लुक. नाउ आई विल अप्लाई लिपस्टिक एंड आई एम डन.
So that's all for this video. Hope you like it. Do like this video and please subscribe to my channel. See you in the next video. Bye guys.